Good afternoon, all. Uh, we are to talk about overview of research methodology. First of all, congratulations to all PhD scholars who are here to begin with their work, who are to do their PhD. Situation is like that you are at one point and in front of you there is a whole path you look. It is like that कि पूरा रास्ता सामने पड़ा है, destination is there and you are thinking from where to begin. It is like कि you are to begin the first page, first line of your research work, of your PhD thesis. But problem is शुरू कहाँ से किया जाए. सबसे बड़ी प्रॉब्लम when you start your PhD thesis is the beginning. How should I begin my work? What should I do? जबकि आपने प्रपोजल बनाने के समय बहुत सारी चीजें हैं जो प्रपोजल बनाने में बहुत सारी चीजें आपने मेथोडोलॉजी के रिलेटेड कर ली हैं, बट अभी भी देयर इज सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू गेट क्लियर. ओके सर, चेंज द स्लाइड. if you see that at present you are the hero in what way कि आपने PhD का एंट्रेंस क्लियर कर लिया है and voluntarily you have decided that I am to begin my work, I am to do research. Now this is not an easy task. It is a task like a hero. There is a critic called Joseph Campbell वो डिस्क्राइब हीरोज जर्नी, और मैं मानता हूं कि आप हीरो की जर्नी एक रिसर्चर की जर्नी से कंपेयर कर सकते हो. व्हाट इज इट ऑल लाइक? इफ यू सी द इमेज देन you will realize that you are in the very beginning where you are in a comfort zone. You are unknown what to do. You are beginning your way. जैसे मैंने बताया that there is an open page in front of you, there is a proposal, you have to begin. When you just cross the threshold, that is जब आप PhD का काम शुरू करते हो, लिखना शुरू करना या सोचना शुरू करते हो, there is a road of trials. What is this road of trials? Road of trials means there are so many struggles. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, कैसे शुरू करना है, प्राइमरी सोर्सेस पढ़ने हैं तो कब तक पढ़ने हैं, सब पहले पढ़ लेने हैं, या फिर डेटा कलेक्शन करना है तो कितने डेटा कलेक्ट करने हैं, कब तक डेटा कलेक्ट करने हैं, व्हाट शुड वी डू फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, हाउ शुड वी बिगिन. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विथ एनी रिसर्चर, that how to begin. So first few months are really critical where बहुत difficult हो जाता है शुरू कैसे किया जाए. Now I will advise that in the very beginning what one should do is read the primary sources. Whatever your thesis topic is, start reading primary sources. If you are working on certain theories, then read those theories. If you are to collect the data, then start before collecting that data, see that what others have done in this field and how they collected data. So few months you should be warming up. Okay, as you warm up, you reach to a certain place that after a semester or so आपकी situation ऐसी होगी, either you are completely strong or you are completely weak. आप स्ट्रॉन्ग कब होगे? जब आपने जो पहले 6 महीने हैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया है. आपने सर्वे किया होगा, रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में सोचा होगा, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचा होगा, स्कोप ऑफ रिसर्च सोचा होगा, टॉपिक के बारे में जो कुछ भी अवेलेबल होगा पढ़ा होगा. सो फर्स्ट 6 मंथ्स आपने प्रॉपरली यूटिलाइज किया होगा, देन यू आर स्ट्रॉन्ग. But if you are in dilemma what to start, from where to start, then after first 6 months you will be in a abyss. It is like a gulf. Means
You want to understand that now what to do. Okay, and as you move further, it it will happen that if you are stronger, you will start going ahead and start working. As you start working, what will happen? You will have different evidences, you will have different data, and if you start working, you face the problem, you solve the problem, and you reach to the conclusion. It is like a hero's journey that your beginning is happy, but as you move ahead, you find problems. But आप उस प्रॉब्लम से हार जाओ, then there is nothing. So like a hero, your journey is to begin positively and keeping yourself very much connected with your research goal, research topic, and going ahead. Change. Change the slide, plus. Change the slide. Hello. Okay, the next question that everyone should have is why research. हमें रिसर्च करनी क्यों है? बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं इसके, बट वन पर्टिकुलर आंसर that you must have with you, that is that when you have written the research proposal, at the end of the research proposal you have written the contribution to the world of knowledge. Now दो आपने ये सबसे लास्ट में लिखा है, बट रिसर्च का सबसे बेहतरीन एम जो है वो है कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज. दैट इज जो आप लिख रहे हो, that is going to be with the people, and people are going to read it. So ultimately आप जो लिख रहे हो वो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में एडिशन है. सो रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट एम है, यू आर गिविंग योर 2 years, 2.5 years, 3 years, whatever number of years you take to complete research. आप अपना रिसर्च है वो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में ये जो है उसमें ऐड कर रहे हो. ओके, बट प्रॉब्लम शुड बी, और ऐसा माना जाता है, देयर इज अ राइटर कॉल्ड R.J. रीज. वो कहते हैं कि योर रिसर्च मस्ट नॉट बी लाइक अ बुक एडिशन ऑफ अ बुक on books. That is, there are so many books available, and if your book is addition to that book which is already available in the world of knowledge, then it is of no use. It means that your work should be helping the world of knowledge. If you go further, then when we find research, then there is one definition. Research is creating new knowledge. Now, what is creating new knowledge? One must understand there are only few things that can be done with the knowledge. हम जब knowledge की बात करें, knowledge के साथ ये 4 चीजें commonly हो सकती हैं, और you can do with that. First, you can create knowledge. You can generate knowledge. That is the first thing you can do. Secondly, what you can do, either you preserve the knowledge or you challenge the older knowledge. That is, जब आप थीसिस लिख रहे हो तो आप या तो जो ज्ञान की परंपरा चली आ रही है उसको प्रिजर्व करते हो, उसको कंटिन्यू करते हो, या आप जो पुराना जो भी नॉलेज है, जो भी थ्योरी है, उसको या आप चैलेंज करके, ओपोज करके नई थ्योरी एस्टैब्लिश कर रहे हो. सो इट इज वेरी क्लियर, आप या तो पुराने नॉलेज को कंटिन्यू करके अपने रिसर्च वर्क में आगे ले जा रहे हो, या आप जो भी नॉलेज अर्लियर है उसके सपोर्ट में कुछ ऐड करके उस नॉलेज को प्रिजर्व कर रहे हो. व्हाट इज द थर्ड थिंग यू डू विथ योर रिसर्च वर्क इज स्प्रेडिंग ट्रू नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. रिसर्च इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम you are spreading the true knowledge. Now, हम बहुत ही क्लियर हैं कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारा जो ट्रू नॉलेज है, that is whatever we have established,
Whatever we have proved, we are going to spread it. And the last one is apply the knowledge. Now, this is very clear that whatever we have proved, we are going to have the application of that knowledge in your daily work, in your society, in your further study, because just creating knowledge or preserving knowledge or spreading knowledge is not fruitful until you apply that knowledge. So the last thing we can do with the research, that at the end of completing the research, is applying that knowledge. Okay, change it. This is a very good lines, or this is a very good stanza by Robert Frost, who says, "These woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep." I can replace that word woods and I can put the word research. Research is lovely, dark and deep. आप देखो तो आप कहोगे research is lovely. It's a very beautiful work. It is a very proud moment that you've taken a PhD. You are doing research. It's a lovely work. But there are two more words, dark and deep. It is like that कि आप जब research शुरू करते हो, आपके सामने अंधेरा है. It is very dark. What to do, how to do, which is the way, किस तरह से करना. Deep means it requires a work because you are not able to see beyond. So research work is like it's very beautiful thing. It is a very amazing experience, aesthetic experience if you do, but it is very dark and deep. But I have promises to keep and miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. But I have promises to keep. You promised yourself that I'll complete PhD. You promised your parents, you promised your teachers that I'll do it. Miles to go before I sleep. That is every day when you have a sleep, before sleeping, before relaxing, every day you must remember miles to go before I sleep. So research is something where you need actually to work. It is not the easiest task that can be done. It's a beautiful memory, beautiful feeling, but at the same time it demands a really a very good work. Change. Now, if we think on research, then research is a lifelong process. हम हर बार कहते रहते हैं teaching is a lifelong process. Research is part of teaching, or research is almost like teaching. It's a lifelong process. It is not that you have begun today, your PhD is over and your research is over. No. Research is a long process. At least आप अपना PhD का duration ही देख लो तो आप समझ सकते हो it takes time. It's a longer process to complete PhD. Research has beginning, no end. Actually trying to say the same thing कि research की शुरुआत हो सकती है, उसका अंत नहीं हो सकता. मैं एक वर्ड और ऐड करके कह सकता हूं कि नॉलेज की शुरुआत हो सकती है, उसका अंत नहीं हो सकता. मीन्स व्हेन आप जब रिसर्च करना शुरू करते हो, यू लर्न सो मेनी थिंग्स. You learn and your learning process has begun. It never ends. It keeps going on and on and on. But at the same time, you must remember research is a common pursuit. That is, research is not an individual work. PhD thesis आपका है, आपको लिखना है, but ये individual task नहीं है. You need help from so many places.
You need the help of library, you need the help of your teachers, you need the help of your fellow PhD scholars, you need the help of your friends, ultimately you need the help of your guide. So जब आप रिसर्च कर रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट जो कुछ भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग टू यू, शेयर विथ अदर्स. इट इज अ कॉमन परस्यूट. हाँ, एज आई हैव रिटन इन द ब्रैकेट विथ योर गाइड टू. मैं ये क्यों लिख रहा हूं कि गाइड के साथ भी शेयर करो. ज्यादातर स्टूडेंट्स और पीएचडी स्कॉलर्स ऐसा फील करते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हैं, हम गाइड से कैसे पूछे. डोंट डू दैट. Guide is there to help you. You have the problems, you have the things with you to discuss. Please discuss with your guide, and guide is given for the same purpose, because until आप जो भी चीजें हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको आप शेयर नहीं करोगे तब तक no one is able to help you out. And the last thing that is about research is journalism. What is the work of journalist? What is the work of a journalist? जर्नलिस्ट का काम है हर रोज कुछ नई खबर ढूंढना, हर रोज कुछ नया ले आना. Researchers should be very much aware about what is new in his field. Researchers should be very much updated like journalist. That मेरे फील्ड में जो मेरा टॉपिक है, मेरा जो एरिया है, मेरा जो स्कोप है, उसमें कौन कौन सी नई नई चीजें हो रही हैं. व्हाट इज न्यू दैट आर हैपनिंग इन माय फील्ड. इफ यू डू दिस, then and then research becomes a very fruitful activity. Okay, change. So what is going to happen? मैंने जैसे आपको पहले बताया कि when you start research or when you start researching, there are certain problem at the initial stage. वैसे भी ये बहुत ही नेचुरल है हमारे लिए समझना कि किसी भी काम को शुरू करना बहुत डिफिकल्ट है. आप आज का ही देख लो. when we are beginning the lecture, in the beginning we had to manage so many things. Once the things are in a process, चीजें ठीक ठाक होती जाती हैं. So there are initial problems with the research. To explain that, I want to share one story with you. This is a story of a soothsayer. एक गांव में एक शूज बना रहे या आप जूते बनाने वाला एक फैक्ट्री है, जूते बनाने की एक फैक्ट्री है. उसका मैनेजर जो है वो अपने 2 शू सेलर को, मार्केटिंग पर्सन को साउथ अफ्रीका भेजता है. व्हाट इज द पर्पस? सेंडिंग विद द पर्पस दैट यू जस्ट गो टू साउथ अफ्रीका एंड सी दैट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग आवर शूज देयर, दैट हमारे जूते वहां पे बिक जाएं, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है. वो 2 मार्केटिंग सेल्स पर्सन को वहां पे भेजता है. थोड़े समय के बाद जब वो मार्केटिंग सेल्समैन वापस आते हैं, जब पहला सेल्समैन वापस आता है, ही सेज दैट हम वहां पे एक भी जूता नहीं बेच पाएंगे. तो जो फैक्ट्री का मैनेजर है, ही सरप्राइज्ड कि कैसा हो सकता है, एक भी जूता नहीं बेच पाएंगे. तो वो कहता है कैसे बेच पाएंगे, वहां पे किसी को पता ही नहीं है जूता मतलब क्या, कोई जूता पहनता ही नहीं है. No one is selling the shoes, no one is putting on the shoes. तो वहां पे कैसे जूते बेचेंगे? No possibility. तभी दूसरा सेल्स पर्सन आके कहता है कि हमारे सारे शूज बिक जाएंगे. वो कह रहा है, तब मैनेजर कह रहा है हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि सारे शूज बिक जाएंगे. तब वो कहता है वहां पे कोई जूता नहीं पहनता, हम सभी को पहनाएंगे. You see, what does the story tell you? Story tell us that there are 2 researchers going for the same purpose. एक वापस आके कहता है कि एक भी जूता नहीं बिक पाएगा क्योंकि कोई जूता पहन ही नहीं रहा है, और
दूसरा कह रहा है कि सारे जूते बिक जाएंगे क्योंकि किसी ने जूता नहीं पहना, हम सबको बेच सकते हैं. सो रिसर्च इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, how you look to the things. So what is the initial problem when you start researching? मैंने बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को, पीएचडी स्कॉलर्स को ये कहते हुए सुना है कि कुछ सोर्स मटेरियल नहीं मिल रहा है, सेकेंडरी सोर्स मटेरियल नहीं है, सपोर्टिव सोर्स मटेरियल नहीं है, या इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, हम शुरू कहां से करें? दिस इज द प्रॉब्लम एवरीवन इज फेसिंग, कि कुछ नहीं मिल रहा है. जब मैं ये सुनता हूं तब मुझे आई डू रिमेंबर हनुमान जी. हम सबको पता है हनुमान जी की प्रॉब्लम यही थी. ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, बट वो संजीवनी लेने जब जाता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम दैट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि व्हाट इज द राइट प्लांट, संजीवनी कौन सी है. हमारी सबकी प्रॉब्लम भी यही है. This is a time where we have information overload. बहुत सारे मटेरियल हमारे साथ पड़े हैं, बहुत सारे सोर्सेस हमारे पास हैं, सोर्सेस ऑफ नॉलेज हैं, बट हमें पता नहीं है कौन सा हमारा है, कौन सा यूज करना है. तो ज्यादातर लोग कुछ नहीं है कहते हैं. एक्चुअली इट इज नॉट कुछ नहीं. एक्चुअली इट इज so many things are there. I have written, bring whole mountain of relevant and irrelevant to your guide. दैट इज आपको रिलेवेंट लग रहा है वो भी, और जो इररिलेवेंट लग रहा है वो भी आप गाइड के पास वापस लेके आओ और गाइड को बताओ, दिस आर द थिंग्स आई हैव सीन. यू नेवर से नथिंग इज अवेलेबल. आई हैव रिटन, नेवर से नथिंग इज अवेलेबल. इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है. पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबिलिटी ये है कि यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज what is right material, what is relevant material and what is irrelevant material. So आपको relevant और irrelevant material में पता नहीं चल रहा है, ये हो सकता है, but material is there. So who will help you there? It is a guide who will help you there. And once again, when known availability is the scope for research. Now this is a very good news for you. जब आप कह रहे हो कि मेरे पास कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब हो रहा है कि इसके ऊपर काम कम हुआ है, बहुत ज्यादा स्कोप है. यस और नो? सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल और रिसोर्सेज इज एक्चुअली अ हैप्पी न्यूज. इट्स नॉट अ सैड न्यूज. दैट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग दैट ओके, द मटेरियल, द टॉपिक, द एरिया आई हैव चूजन इज रियली समथिंग जिसमें बहुत कम काम हुआ है. And for that, the last thing what we need is continuous engagement with the topic. This is most important thing. You must be all day, keep yourself very much busy with the topic. What is available on the topic? What can be done with the topic? When I am saying this, I am saying with full confidence कि जब आप पीएचडी कर रहे हो, आपके लिए आपके टॉपिक के बारे में सोचना, आपके टॉपिक के आसपास की चीजों के साथ कनेक्टेड रहना, कंटिन्यूअसली एंगेज रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये करने के बाद आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी easier for you to go further. Please change. So as you are continuously engaged, what is going to happen when you think that you are continuously engaged? There are 4 things that one scholar should have. First is curiosity. मैं आपको बताऊं, जब आपने पीएचडी का एडमिशन लिया होगा, आपको एडमिशन मिल गया होगा, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ. हाँ, आप बहुत खुश हुए होंगे, आप क्यूरियस हो, मुझे ये करना है. बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हो, तब ये क्यूरियोसिटी कम होती जाती है. मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स में देखा है दैट 2 years of research work or more than 2 years of research work actually brings a kind of laziness in the researcher. There are moments when you start losing the hope. There are moments जब आप
काम करना नहीं चाहते, काम करने का मूड नहीं होता, काम करना अच्छा नहीं लगता, you need a rigor, you need enthusiasm to do certain things. You must maintain that enthusiasm. Okay, okay, something that I have taken, I have to complete. If you lose the enthusiasm, if you lose the confidence, then it would be very difficult for you to complete your PhD work in the time duration that is decided. So rigor is the second thing. Third thing, that how to maintain or manage this curiosity and rigor. The most important thing is dialogue. Talk to others. I told you that talk to your friends who are who are with you, PhD scholars. Talk to your teachers who have taught you in the UG, teachers जिन्होंने आपको PG पे पढ़ाया है, your guide. Talk with everyone, with dialogue, with expressing yourself to others, with discussing the thing. If you don't discuss, things won't happen. So discussing is a most important thing. And the last is resilience. When you have all these things together, I'm damn sure that a kind of confidence, a kind of courage, kind of positivity will come in you, and you will be able to carry forward your work with success. Okay, change. So with all this, what is the solution? I think this is the easiest thing one can ask you, or what you can do. What is the most important thing PhD scholar must be doing? That is read, read, misread, reread. That is to say, reading is the only solution. We must एक्सेप्ट कि आज के दौर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है हैबिट ऑफ रीडिंग धीरे धीरे छूटती जा रही है. नो व्हेन यू कांट रीड, न्यू आइडियाज वॉन्ट कम, बिकॉज आवर पर्पस इज टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज. और कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज तभी पॉसिबल है जब आप की रीडिंग regularly hogi. What is to read then? So many things. Primary sources, the students who are from humanities, that is arts, languages and all such things, they can read all such things, relate their original books, their primary sources they should be reading. Okay, the students who are from commerce and science fields, they must be reading the theories. जो थियरीज उनको अप्लाई करनी है, जिनके ऊपर उनको काम करना है, लेट दे शुड रीड दैट. जर्नल्स, कितने सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं उनके टॉपिक के ऊपर, उनके टॉपिक के आसपास, उनके एरियाज के ऊपर. दे शुड बी रीडिंग दोज जर्नल्स, दे शुड बी रीडिंग वेब पेजेस. सो वॉट एवर मटीरियल इज अवेलेबल अराउंड अस मस्ट बी रेड. ओके, सो when there is one word, misread. What is misread? Misread is reading in a different way than the traditional reader reads. Let me explain it properly. कि misread करने का मतलब ये नहीं है कि गलत पढ़ना, गलत नहीं पढ़ना है. हम जब कह रहे हैं misread, हम कह रहे हैं कि जो अब तक जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, उन्होंने उस तरीके, उस चीज को, उस एरिया को, उस प्रॉब्लम को जिस तरह से देखा है उससे अलग तरीके से देखे, पर्सपेक्टिव चेंज करके देखे. आई कैन गिव यू वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दैट इन इंग्लिश लिटरेचर देयर इज एन एपिक कॉल्ड पैराडाइज लॉस्ट. नाउ पैराडाइज लॉस्ट is a work written by Milton.
ऐसा माना जाता था, जितने लोगों ने इनको पढ़ा तब कहते थे कि पैराडाइज लॉस्ट का हीरो जो है वो एडम है। इट्स अ स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव। ज्यादातर लोग, जितने भी क्रिटिक्स थे, इवन राइटर माइट बी थिंकिंग दैट कि इसका हीरो एडम है। बट वी हैव अ पर्सन, वी हैव अनदर क्रिटिक हु इज रीडिंग इन अ डिफरेंट वे, जो देखता है कि पूरी स्टोरी में सेंट्रल कैरेक्टर तो शैतान लग रहा है, क्योंकि पूरी स्टोरी की मूवमेंट है वो एडम से मूव नहीं कर रही है, सैटन से मूव कर रही है। तो वो कह रहा है नहीं, हीरो शैतान है। इसी दिस इज अ मिसरीडिंग। उसके पहले के जितने भी लोग थे, उसने स्टोरी को एक ही ट्रेडिशनल वे से पढ़ा और कहा एडम इज अ हीरो। देयर इज अ पर्सन who is arguing, who is proving the proposal, who is putting the idea that hero is not Adam, but hero is someone else, and hero is Satan. So मैं जो सजेस्ट कर रहा हूं कि आप जिस भी चीज को पढ़ रहे हो, और दिस इज वेरी सिंपल ना, जब आप एक चीज बार बार पढ़ोगे, योर अंडरस्टैंडिंग विल चेंज। आपको पहली बार जब पढ़े हैं तब जो आइडिया आया, वो दूसरी बार पढ़ोगे या तीसरी बार पढ़ोगे तो देयर वुड बी सम डेप्थ, देयर वुड बी सम novelty in what you read, novelty in what you understand. Yes or no? So reading, from my perspective, reading is the most important thing as a PhD scholar. Okay, please change. Now, next question, we must think, this is something we think about research. Now, let us think about when we say methodology. Why methodology? हमें सोचना पड़ेगा क्यों रिसर्च मेथोडोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। What is methodology actually? It is a systematic study of topic. Now, जब मैं कह रहा हूं it is a systematic study of topic, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिस्टमेटिक स्टडी ना करो तो कुछ नया नॉलेज नहीं आता। नया नॉलेज एक्सीडेंटली भी आता है। ये सुनो, हम सबको पता है दैट ग्रेविटी फोर्स, जिसके बारे में एक बहुत ही सिंपल और पॉपुलर स्टोरी है कि एक फ्रूट नीचे गिरता है, तब क्वेश्चन होता है कि ये नीचे ही क्यों गिरा, और उसके बाद काम शुरू हुआ। यू सी, इट सीम्स दैट कि ये एप्पल नीचे गिरा इसलिए क्वेश्चन आया, बट सी, ये एप्पल गिरा और क्वेश्चन आया और एक कंप्लीटली न्यू इन्वेंशन हो गया। नो वे, दैट्स नॉट द थिंग। एक्चुअली अ पर्सन जिसके सामने वो एप्पल गिरा, ही इज अ पर्सन ऑफ रिसर्च, ही इज अ पर्सन हु इज अ साइंटिस्ट, he has a systematic way of thinking, and that systematic way of thinking had invented the law of gravitation force. So see, every invention has to be done in a systematic way, because if you don't do it, then there is a disorder. Disorderly work is not a research. Research is an orderly work. सब कुछ बिखरा पड़ा है, that is not a research. When knowledge is arranged properly, that is research. How to do it systematically then? जैसे हमने पहले कहा, read. Second thing comes analyze. How to analyze? हम किसी भी चीज को एनालाइज कैसे करते हैं? एनालाइज करना मतलब हमें उस टॉपिक के बारे में पास्ट नॉलेज अवेलेबल है, हमने कुछ पढ़ रखा है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन दैट पास्ट नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंस, यू एनालाइज योर टॉपिक, यू थिंक ओवर योर टॉपिक, you start focusing on your topic. That is what is analyzing.
एनालिसिस कब होता है? जब आपके पास उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हो, वरना एनालिसिस कैसे होगा? एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप कालिदास को पढ़ रहे हो, शेक्सपियर को पढ़ रहे हो, किसी भी कॉमर्स के थियरिटिशियन को पढ़ रहे हो, साइंस के किसी साइंटिस्ट को पढ़ रहे हो, इसके ऊपर काम कर रहे हो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग? यू कैन नॉट जस्ट जंप टू एनालाइज, रीड इट, and whatever you have read, your past experience, your past reading will help you to analyze, and after analyzing you reach to certain decision, you reach to certain conclusion that this is this. This is, or when I say, when you come to the conclusion, means you can prove something. It is that when there is a discovery or invention done, कोई भी इन्वेंशन हो जाता है तो इन्वेंशन होने के बाद डेमोन्स्ट्रेट करना है हाउ इट हैपेंड, एंड it can only be demonstrated if you have done your research systematically. ये नहीं हो सकता कि आपने कोई चीज इन्वेंट कर ली फिर आपको पूछा जाए तो कि नहीं से ये तो एक बार हो गई अब नहीं होगा. No, that is not research. Research is something that you can demonstrate. You can demonstrate the process. You can show the process. आप steps दिखा सकते हो कि this is the way I have done, this is the way I have worked, and ये तरीका है जिससे मैंने रिसर्च किया है. इसीलिए तो कई बार कहा जाता है कि आप पोएट्री पढ़ो, कोई भी थ्योरी पढ़ो या डेटा कलेक्ट करो, आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए. इफ यू डू नॉट नो द प्रोसेस, इवन डेटा कलेक्टिंग वुड बी डिफिकल्ट. कोई भी चीज सिस्टमेटिकली ना हो तो बहुत ही डिफिकल्ट है. वी नीड अ सिस्टम, एंड दैट्स व्हाई द मेथोडोलॉजी. सिस्टम तो कैसे सिस्टम चाहिए? हमें कैसी मेथोडोलॉजी चाहिए? हमें मेथोडोलॉजी चाहिए जिसको हम दिखा पाए, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेबल. हमें मेथड चाहिए जिसको हम वेरीफाई कर पाए, इट इज वेरीफाइबल. ऐसा नहीं हो सकता कि जिस रास्ते से आप निकले एक पॉइंट से और दूसरे रास्ते तक पहुंचे, आप कहोगे मैं पहुंच गया. इट शुड बी वेरीफाइबल. दूसरा पीएचडी स्कॉलर भी उसी रास्ते पे पहुंच जाना चाहिए. इट शुड बी वेरीफाइबल. तीसरा भी, चौथा भी. एनीवन हु इज यूजिंग द सेम मेथड, एनीवन हु इज यूजिंग द सेम सिस्टम शुड बी एबल टू रीच द सेम कंक्लूजन. समझ में आ रहा है? इसको हम कहते हैं मेथोडोलॉजी. सेम प्रोसेस से की गई चीज सेम कंक्लूजन पे ना ले आए तो हमारा रिसर्च गलत है. इट शुड बी वेरीफाइबल, एंड लास्ट इट शुड बी यूनिवर्सल. कि आपने जो रिसर्च किया है, इट शुड बी डन बाय एनीवन, इट मस्ट बी गिविंग द सेम रिजल्ट. साइंस बिलीव्स इन दैट, सिस्टम बिलीव्स इन दैट, कि जो भी चीज एक बार हुई, बार बार हुई. इसीलिए तो देखो, कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं साइंटिफिक लेबोरेटरी में? हम एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं कि एक बार एक चीज हो चुकी, वो हर बार होगी. पानी है, वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे इट वुड बी टर्न इनटू गैस, वो गैस में कन्वर्ट होगा. पानी है, वो 0 टेम्परेचर पे आइस में कन्वर्ट होगा. वो वेरीफाइबल है, यूनिवर्सल है, क्योंकि जो इसके ऊपर रिसर्च की गई, वो लिखा गया जब ये 0 टेम्परेचर पे ये होगा और 100 टेम्परेचर पे ये होगा. वो सिस्टमेटिक रिसर्च से किया गया है. इट इज प्रूव्ड, इट इज वेरीफाइबल, इट इज यूनिवर्सल. सो जो भी रिसर्च वर्क आप कर रहे हो और जो भी कंक्लूजन पे आ रहे हो, इट मस्ट बी, आई एम रिपीटिंग ऑल द 3 वर्ड्स अगेन, इट इज डेमोन्स्ट्रेटेबल, it should be verifiable, and it should be universal. Okay, please change. Now, when we begin a research,
मुझे पता है तब तक हम जब रिसर्च शुरू करते हैं तो डेस्टिनेशन पहले ही पता होता है। मैंने जब कहा कि हम जर्नी शुरू करेंगे रिसर्च की, इसका मतलब है कि जब आप किसी बस में बैठे हो, आपको पता है कहां जाना है। डेस्टिनेशन इज ऑलवेज क्लियर। यस, बट व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज प्रेडिक्टिंग अबाउट द फ्यूचर आउटकम। आप जब रिसर्च शुरू कर रहे हो तब आप कह रहे हो कि ये चीज होगी। देयर आर 4 वर्ड्स, लेट मी रीड द डेफिनेशन फर्स्ट। अ हाइपोथेसिस इज एन assumption that is made based on some evidence. So what is hypothesis? जब आप हाइपोथेसिस लिख रहे हो, ये आपका assumption है, ये आपका गेस है। Now, the assumption is not done without evidence. हाँ, जब आप हाइपोथेसिस लिख रहे हो तब आपके पास एविडेंस है, आपके पास प्रूफ्स हैं, आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं जो कह रहे हैं कि जब हम ये करेंगे तो ये होगा। यस और नो? When we begin with this will happen. So hypothesis is a statement that give assumption on the base of evidence. But when it is needed, hypothesis is needed when you do any investigation, that is a research. At present you are going to do PhD work, your thesis. So in any investigation, what do you need? You need a hypothesis which is based on assumption and supported by the evidence. And what it does, it translate the research question into prediction. जो आपका रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च प्रॉब्लम है, उसको वो प्रेडिक्शन, आउटकम के फॉर्म में डिक्लेयर करता है। बट हाइपोथेसिस एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर ये मान के चलते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस लिखा है वही हमें पीएचडी के थीसिस के एंड में प्रूव करना है। लेट अस बी वेरी क्लियर, नो, दिस इज नॉट टू बी डन। आपका रिसर्च वर्क का काम ही यही है कि आपने जो हाइपोथेसिस लिखा है वो एट द एंड ऑफ द वर्क, इट कुड बी कंप्लीटली ट्रू, इट कुड बी पार्शियली ट्रू, इट कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग। हाँ, हो सकता है, क्योंकि योर assumption were based on evidence, but when you started reading, you realized that this cannot happen. Let me give you the example of my own research work that I had done. I had worked on the travelogue. अब हिंदी में प्रवास साहित्य कह सकते हो, गुजराती में प्रवास निबंधो, that is the word you can use. मैंने उसके ऊपर काम किया और वो वर्क था कि जो फॉरेन राइटर्स हैं उन्होंने और फॉरेन ट्रेवल राइटर्स ने इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट किया है। अब मेरे दिमाग में, मैंने जब ये रिसर्च वर्क हाथ में लिया तब मेरे दिमाग में मैंने जो कुछ पढ़ के रखा था, जो कुछ पास्ट नॉलेज था, उसके बेस पे मैं ये मानता था कि जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उन्होंने इंडिया को नेगेटिवली रिप्रेजेंट किया है, या ज्यादातर उन्होंने इंडिया की नेगेटिव साइड्स दिखाई है, पॉजिटिव नहीं दिखाई या कम दिखाई है। दैट इज व्हाट वाज माय हाइपोथेसिस। सो व्हाट आई वाज टू प्रूव दैट कि इंडिया हैज सो मेनी ग्रेट थिंग्स, बट इन राइटर्स ने उसको समझा नहीं और नेगेटिवली लिखा। बट लेट मी शेयर कि जब मैंने अपना रिसर्च वर्क किया तब मैंने रियलाइज किया कि जितने भी फॉरेन राइटर्स हैं उन्होंने जब जब इंडिया के बारे में नेगेटिव लिखा है तब वो कंप्लीटली गलत नहीं थे। ओनली प्रॉब्लम वाज दैट कि आई वाज लुकिंग टू इंडियन प्रॉब्लम फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव।
प्रॉब्लम ये थी कि मैं भारत का हूं, इसलिए भारत के बारे में कोई गलत लिखता था तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तब मैंने देखा कि अब मैं एक फॉरेनर की तरह इसको देखूं, इफ आई चेंज द पर्सपेक्टिव, then what can be the thing? When I changed the perspective, I understood कि जैसे हम फॉरेन के बारे में गलत चीजें लिखते हैं या हम उनकी जो कुछ भी चीजें हैं, जो कुछ भी ट्रेडिशंस हैं, उनमें से हम फॉल्ट निकालते हैं, वो फॉल्ट उनके लिए फॉल्ट नहीं है। वैसे ही जो फॉल्ट उनको दिख रहे हैं वो हमको नहीं दिख रहे हैं। सो आई रियलाइज्ड that hypothesis must be changed. It is not needed to prove as it is. Let me tell you one very good story of cockroach. It is a very funny anecdote. ये कभी हुआ नहीं होगा, but मैंने ये जब सुना तब मुझे लगा कि जब हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं तो ये स्टोरी आपको हेल्प करेगी समझने के लिए कि हाइपोथेसिस कि आउटकम को हम गलत कैसे मान लेते हैं, हाइपोथेसिस को ही हम आउटकम में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एक बार एक बंदा है, वो कॉकरोच को लेता है और उसका एक पांव खींच लेता है, काट देता है, तोड़ देता है, और जब देखता है तो कॉकरोच एक पांव काटने के बाद दौड़ के आगे निकल जाता है। फिर वो वहां से कॉकरोच को उठा के ले आता है और दूसरा पांव काटता है। जब दूसरा पांव खींच के निकलता है तब भी वो कॉकरोच दौड़ के भागता है। वो बंदा वापस कॉकरोच पकड़ने जाता है, वहां से लेके आता है, तीसरा पांव काटता है। उस तरह से हर बार ये एक एक पांव काटता जाता है, कॉकरोच दौड़ता है और लास्ट तक जाता है। और हर बार जब ये कॉकरोच का पांव काटता है तब कहता है गो, और कॉकरोच भागता है। सेकंड पैर काटा और कहता है गो, कॉकरोच भागता है। हर बार पैर काटा और कहा गो तो वो भागता है। जब उसने कॉकरोच के सभी पांव काट दिए तब उसने कहा गो। आपको और मुझे दोनों को पता है अब कॉकरोच भागेगा नहीं, क्योंकि सभी पांव कट गए। और उसने आउटकम क्या निकाला पता है? उसने कहा, दिस इज वेरी हिलारियस, उसने कहा कि जब कॉकरोच के सभी पांव काट दो तो कॉकरोच बहरा हो जाता है। नाउ इट सीम्स ह्यूमरस। सुनने के बाद स्टोरी लग रही है कि ये तो जोक है। हाँ, ये जोकी है कि कॉकरोच के सभी पांव काटने से वो बहरा नहीं हो जाता है। बट हम कई बार इसको ही आउटकम माने, क्योंकि हमारी रिसर्च सिस्टमेटिक नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, जो इस बंदे ने कॉकरोच के पांव काटने के बाद जो रिजल्ट दिया वो रिजल्ट हमारे थीसिस का एंड होगा, कंक्लूजन होगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स व्हाई methodology, a system is needed to do something properly and to reach to the right conclusion. Otherwise हम सब उसी सिचुएशन में होंगे जहां पे ये बंदा कॉकरोच के सारे पांव काटने के बाद कह रहा है कॉकरोच बहरा हो चुका है। चेंज प्लीज। सो व्हेन यू डू रिसर्च, मैंने पहले ही कहा कि रिसर्च इज टू क्रिएट अ न्यू नॉलेज, क्रिएट समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग दैट इज न्यू। मुझे पता है तब तक आपने जब भी प्रपोजल लिखा है तब आपने उस प्रपोजल में 3 या 4 लाइन लिखी हैं जिसमें आपने लिखा है कि मैं ये टॉपिक क्यों लिख रहा हूं, मैं इसके ऊपर रिसर्च क्यों करना चाह रहा हूं। आपने वहां पे हर बार प्रूव किया है कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसके ऊपर काम नहीं हुआ है, मेरा जो काम है, मेरी जो रिसर्च है वो नई है। तो इफ ये नई रिसर्च है तो कौन कौन से आयाम जो हैं वो हमें सिस्टमेटिकली, मैथोडोडिकली, थ्रू मैथोडोलॉजी वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू think about creating new knowledge in a research. Then there are 4 things we must understand. First is the scope of research. What is the scope of research? Second, you must understand the perspective of research, the angle.
of research. Third is method and tools of research. And last, research ethics. So in your research, in your PhD thesis, you should be very much concerned about four things. I repeat all the four: scope of research, perspective of research, method and tools of research, and research ethics. Please change. So, when we say, please change the slide. When we say scope of research is like preparing for a journey. It is like a scope of travel. आप जब घूमने जाते हो तब आप सोचते हो कि कहां जाएंगे. There are so many places to go. Scope of research is that when you think of working on research, or you can say when you think of doing PhD, what is a scope? What is the first thing you must be doing? First thing you must be doing is exploring the broad areas, exploring the broad interests. That जब आप सोचते हो कि मुझे PhD करना है, तो सबसे पहली चीज है कि what are the scopes? कहां कहां और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर PhD हो सकता है. Yes or no? So the beginning is thinking about the broader area. Simple. Let me explain you simply. Suppose आप लिटरेचर पे काम कर रहे हो, तो be focused. Want to work on novel? Want to work on poetry? Want to work on drama? Be very clear. If you are in commerce, think कि किसके ऊपर काम करना है. Do you want to work upon the customers? Do you want to work upon the factories? Do you want to work upon the government policies? What is your broader area? As you move further, then identify the research gap. This is a very important word. बार बार सुना गया है, research gap. Research gap का मतलब है कि आपके पहले जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने काम किया है, वो रिसर्चर्स, एंड आप जो काम कर रहे हो उसके बीच में गैप है, उसके बीच में डिस्टेंस है, उसके बीच में कुछ कमी है. आपको उस कमी को पूरा करना है. टू फील द रिसर्च गैप, बट टू फील द रिसर्च गैप यू मस्ट नो व्हाट इज अ रिसर्च गैप. हमारे पास जब व्हेन यू ईट फूड, आप कुछ टेस्ट करते हो, खाते हो, तब आपको लगता है कि कुछ कमी है इसलिए टेस्ट नहीं आ रहा है. बट रिसर्च गैप इज आइडेंटिफाइंग दैट फॉल्ट, आइडेंटिफाइंग दैट गैप, कि आपको ये चीज खाने में क्यों मजा नहीं आ रहा है. नमक कम है, तीखा कम है, मीठा कम है, क्या कम है. रिसर्च गैप. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू मस्ट आइडेंटिफाई that what is the area that is missing, and I should be working on that area. And the last one is access feasibility. जब हम कहते हैं access feasibility, actually feasibility of available resources. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम PhD का प्रपोजल लिखते हैं तब हम एक अलग सोच से प्रपोजल लिखते हैं. सोच होती है कि कुछ अलग लिखना है, कुछ यूनिक प्रपोजल बनाना है जो किसी ने ना लिखा हो, क्योंकि हमारा पर्पस है कि हमारा PhD का प्रपोजल सिलेक्ट हो जाए. सो जब आप सिलेक्शन करवाना चाहते हो अपने PhD प्रपोजल का, तो आइडिया ये है कि आप वो कैसे यूनिकली लिखो, कैसे स्पेशल प्रपोजल लिखो, कैसे ऐसा टॉपिक ढूंढो जिसपे कम से कम काम हुआ हो, आप ढूंढ लेते हो.
बट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप प्रपोजल लिख रहे हो तब आप ये सोचना भूल जाते हो कि इसके ऊपर प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, नहीं है तो मैं कैसे करूंगा, जो मैंने आगे भी डिस्कस किया कि हमारी प्रॉब्लम हो जाती है दैट रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट मटेरियल इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। सो जब आप जर्नी शुरू कर रहे हो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि हमारे पास अवेलेबल क्या है, जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं कैन वी गो फर्दर, कि जस्ट टू प्रूव दैट मैं कुछ अलग कर रहा हूं, मैं कुछ यूनिक कर रहा हूं, आप काम शुरू कर रहे हो। सो बी वेरी क्लियर कि आप जो टॉपिक ढूंढ रहे हो उसका ब्रॉडर एरिया, फर्स्ट थिंग identify the missing thing, and third find out what are the sources, resources, supporting material I have to work on my topic. Please change. So when you do this, your finding out your broader area, finding out the research gap, and having the resources, supporting material, you must come to the research problem. That is what you are going to work upon. आप क्या सॉर्ट आउट करना चाहते हो, आप क्या सॉल्व करना चाहते हो, आप किस सिचुएशन को, किस आइडिया को एनालाइज करके एक कंक्लूजन पे आना चाहते हो। ओके, सो व्हाट शुड वी डू? आइडेंटिफाई अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट इज अ चूज अ फील्ड और टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स दैट डोंट चूज द टॉपिक जो आपके दोस्त या आपके टीचर या आपके गाइड या कोई भी कह रहा हो। प्लीज आपका टॉपिक दूसरों का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम आपको करना है 2 साल 3 साल। आप जब भी टॉपिक चूज कर रहे हो यू शुड सी दैट एम आई कंफर्टेबल विद द टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। If you are not comfortable with the topic, please don't select it. कोई और बंदे ने किया इसलिए आपको ये करना है, नहीं। कोई कहता है कि दिस इज वेरी कॉमन, आई हैव हर्ड अमंग PhD scholars कि ये टॉपिक ले लो इजीली हो जाएगा। See, we are not to do easy work. PhD is not an easy work, because if it is easy work then everyone would be doing PhD. Only few like you are doing PhD. You are called PhD scholars. You are not to do easy work. Don't take easy. Don't take difficult. Take which is of your interest. जिसमें काम करना आपको अच्छा लगे, क्योंकि उसके साथ, उस टॉपिक के साथ 2-3 साल बिताने हैं। Then review existing literature. जो मैं कह रहा था, जब हम कह रहे हैं कि रिसर्च गेप है, तो उसके पहले जितना काम हुआ है, द प्रेडिसर्स, द रिसर्च स्कॉलर्स, द राइटर्स, द क्रिटिक्स, PhD स्कॉलर्स, जिन्होंने और जर्नल राइटर्स, आर्टिकल राइटर्स, जिन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे काम किया या आपके टॉपिक पे काम किया है, सी क्या अवेलेबल है आपके पास, व्हाट इज द अवेलेबल मटीरियल विथ यू। नेरो डाउन द प्रॉब्लम। जो मैंने कहा कि डोंट टेक अ वेरी बिग प्रॉब्लम। PhD thesis should not be the too long a problem. Problem should be that you should be able to justify within the duration. आपका जो ड्यूरेशन है तब तक आप उसको जस्टिफाई करके आप रिजल्ट तक आ सको उतना। मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर सकता हूं कि आप चीज को इतना भी दूर ना रखो कि आपको कुछ दिख ना पाए, और इतना नजदीक भी ना रखो, आंख के आगे ले नहीं आना है, इतना आगे भी ना लेके आओ कि अंधेरा छा जाए। It should not be too easy. It should not be too difficult.
It should be, that is, your research problem should be workable. I'm using a word. हाँ, कैसी प्रॉब्लम है? Your research problem should be solvable. आपको ऐसी प्रॉब्लम लेनी है जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है. सॉल्वेबल प्रॉब्लम इज नीडेड. Then formulate a research question. This is a very good thing. Your research question should be properly formed. मुझे पता है आप में से कई सारे लोग, कई सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स होंगे, स्कूल्स में पढ़ाते होंगे, कॉलेज में पढ़ाते होंगे. हम अपने बच्चों को बार बार एक चीज सिखाते हैं कि क्वेश्चन पूछो, फिर कहते हैं कि प्रॉपर क्वेश्चन पूछो. हम जब कहते हैं ना प्रॉपर क्वेश्चन पूछो, यही रिसर्च में अप्लाई होता है कि आप रिसर्च में प्रॉपर क्वेश्चन पूछो, प्रॉपर क्वेश्चन स्टेट करो. क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं पता होगी, आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे. मैं आपको बहुत ही इजियर वे से एक्सप्लेन करता हूं. इट इज लाइक दैट आप डॉक्टर के पास जाओ और वो डिसीज, दैट इज अ प्रॉब्लम, इफ ही इज नॉट एबल टू फाइंड आउट द डिसीज, देयर इज नो क्योर. जब तक उसको डिसीज का पता नहीं है, प्रॉब्लम का पता नहीं है, उसका कोई क्योर ही नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड द लास्ट, चेक फिजिबिलिटी. जो मैंने कहा कि आप जो करने जा रहे हो, यू थिंक कि इज इट अ पॉसिबल प्रॉब्लम टू सॉल्व? कैन आई डू इट? मुझसे होगा? इतने समय में होगा? इस तरीके से होगा? हाँ, फिजिबिलिटी. इफ यू डोंट सी द फिजिबिलिटी, देन यू विल बी इन अ ट्रबल. ओके, please change. So what we were saying, scope of research. Now let us talk in detail. When we say scope of research, what do we mean by that? We have understood that it's a broader area first, missing link second, and feasibility third. अब ये तो कर लिया, बट वेन यू डू इट मेथोडोलॉजिकली, वेन यू डू इट सिस्टमेटिकली, देन व्हाट यू शुड सी. फर्स्ट, दिस इज वेरी क्लियर विद एग्जाम्पल. जनरल स्कोप. आप जब आपका एरिया पसंद कर रहे हो, यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट द ब्रॉडर एरिया यू आर वर्किंग ऑन. Are you going to work on the students? Are you going to work on the customers? Are you going to work on the any social issue? Then you should be very clear about the social issue. Are you going to work on any scientific data, on any scientific problem? Then you should be very clear about the scientific problem. That is a broader area. As I have written the example, that study examines the impact of social media on college students' academic performance. That is, I have given the same example in trying to make you understand that कैसे हम general scope से आगे. So general scope यहाँ पे क्या है? हमें ये देखना है कि social media का students के academic performance में क्या impact होता है. That is your broader area you want to work upon. ठीक है. अब ये आपका पीएचडी का टॉपिक नहीं हो सकता, ये आपका पीएचडी प्रॉब्लम नहीं हो सकता. देन आपको नैरो डाउन करना है. व्हाट इज दैट नैरो डाउन? स्पेसिफिक स्कोप. व्हाट इज अ स्पेसिफिक स्कोप और पर्टिकुलर स्कोप? फोकस ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप यूसेज अमॉन्ग अंडरग्रेजुएट आर्ट स्टूडेंट्स इन गुजरात. नाउ सी, यू आर मेकिंग इट क्लियर कि आप सोशल मीडिया में से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ले रहे हो और कॉलेज स्टूडेंट्स में से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ले रहे हो और वो भी गुजरात के ले रहे हो. सी, यू आर बिकमिंग स्पेसिफिक in your scope. As you go further,
दैट इज कंसेप्चुअल डिलिमिटेशन। अब आप कंसेप्ट वाइज इसको स्टील आगे ले जा रहे हो, दैट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस इज लिमिटेड टू सेमेस्टर एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ओनली। अब आप कह रहे हो एकेडमिक परफॉर्मेंस, अब एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब क्या? आप जज कैसे किसको आप एकेडमिक परफॉर्मेंस कहते हो? तो हम कह रहे हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस सेमेस्टर एंड की मार्कशीट है, उसको हम एकेडमिक परफॉर्मेंस मानेंगे। उसके मार्किंग के बेस पे देखेंगे कि इंस्टाग्राम और इसका क्या इफेक्ट हुआ। एंड लास्ट वन, ऑपरेशनल डिलिमिटेशन। व्हाट इज ऑपरेशनल डिलिमिटेशन? Operation delimitation, that is methods and tools you are going to use. What methods and tools you are going to use? Data collected through questionnaire and interviews and experiment excluded. आप क्या करने वाले हो? आप डेटा कलेक्ट करोगे, what are the tools, what is the method you are going to use? So आप simply explain करो, simply समझना चाहो तो आपको करना है what is a broader area, then what is a specific particular area. In particular area, be very specific about the region, about the standard, about the area, about whatever, about the name of the factory, about the name of the city, about the name of the district you want to work upon. Okay, you should be very, and at last, which method and tool you are going to use. आप कौन सी method use करने वाले हो? What are the tools you are going to use? That you should be very clear when you are doing your research. Change, please. Now, we all have done this. Survey the known world. Now, when you have all this, you have research problem, all such things have been done. Most important thing is survey the known world, जिसको हम कहते हैं review of literature. That is, you must survey the known world. मैं आपको simply explain करूं, you can understand कि आप, once again I am taking the journey metaphor to make you understand easier, कि आप जब कहीं घूमने जाते हो तो आप क्या करते हो? आप जिस जगह जाने वाले हो उसके बारे में इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालते हो। कोई वहां घूमने गया है तो उसके पास से इंफॉर्मेशन निकालते हो। सपोज कोई यूट्यूबर है जो वहां गया है, उसने उसका वीडियो अपलोड किया है, तो आप वहां से इंफॉर्मेशन निकालते हो। सपोज यू आर रीडिंग अ ट्रैवल बुक, ट्रैवल मैगजीन, आप उसको पढ़ के वहां से इंफॉर्मेशन निकालते हो, एंड देन यू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। Am I true or not? Even you go to the travel agent and talk to him. See, before you begin your journey to reach the destination, you must know everything about that world. You must know the surrounding thing about that, जिसको हम कहते हैं review of literature or survey of literature. So how it must be done? Systematic search, जो मैंने कहा ना, that you search it systematically. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, आप शोध गंगा में जाओ, गूगल स्कॉलर में जाओ, लाइब्रेरी में जाओ, अलग अलग जगह पे जाके जर्नल्स को देखो, वेबसाइट्स पे देखो कि इसके ऊपर क्या क्या काम हुआ है। ओके, देन क्रिटिकल सिंथेसिस। जब आप ये सब देख लेते हो, सब डेटा साथ कर लेते हो, तब यू शुड क्रिटिकली थिंक कि इसमें से कौन सा वर्क जो है वो मेरे टॉपिक से रिलेवेंट है, मेरे टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, और नहीं है तो कौन सी चीज है जो मेरे पहले जितने भी रिसर्चर्स हैं दे हैवंट डन एंड आई मस्ट बी डूइंग। Okay, so that is what you need to find, and at last you should be positioning your work. आपको आपका वर्क वहां पे रखना है। मुझे पता है तब तक आप जब PhD का प्रपोजल रखते हो, तब आपको जब वाइवा होता है, उसका जब
जब जब आपका वाइवा होता है तब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इफ यू हैवंट डन अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर देन देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। आप सपोज आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं कर रहे हो, एक टॉपिक फाइंड आउट किया, उसके ऊपर 2 साल 3 साल काम कर लिया, बुक पब्लिश कर दी, तब आपको कोई कहेगा भाई तूने जो काम किया वो तो नेट पे आज से 10 साल पहले हो चुका है, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल। तुम्हारे काम का 80% इज रेडी, जस्ट 20% इज योर कंट्रीब्यूशन, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। सो जब आप रिसर्च कर रहे हो तब आपको यह पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं उससे पहले कितना काम हो चुका है, बिकॉज whatever you are going to do is your contribution. Your contribution should be newer. Your contribution should be unique. If it is not the case, then we must think that, मैंने कई बार देखा है कई सारे लोग रिसर्च के टॉपिक ले लेते हैं, काम करना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं कि सर इसके ऊपर तो बहुत सारा काम हो चुका है, पहले मुझे नहीं मिला, बहुत सारी चीजें मिल रही है। नाउ देन देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपका टॉपिक और आपका सर्वे ऑफ लिटरेचर प्रॉपर नहीं रहा होगा। सर्वे ऑफ लिटरेचर शुड बी वेरी क्विक, रादर सॉरी वेरी गुड। प्लीज चेंज। सो आफ्टर स्कोप लेट अस मूव टू पर्सपेक्टिव, methods and tool. Now what is this perspective? सिंपल सी चीज है, आप चीजों को कैसे देखते हो। आप जो अपनी रिसर्च करने वाले हो, यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर, you must be very much clear about the way you are doing. We have written that select your paradigm, means select your stand. आप कहां से खड़े होके चीज देखते हो। पर्सपेक्टिव मस्ट बी वेरी क्लियर। आप कौन से पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना चाह रहे हो। चूज योर रिसर्च डिजाइन। मैंने लिखा है व्हीकल, व्हाट इज व्हीकल, कि आप किस व्हीकल से जाओगे, जर्नी कहां से करोगे, कैसे करोगे। टूल्स, पिक योर मेथड। कहने का मतलब है दैट पर्सपेक्टिव, मेथड एंड टूल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ, सी बहुत बार कही गई चीज है कि 1 रुपए का कॉइन रखा जाए और 2 लोग अलग अलग, एक इस तरफ खड़ा हो और एक सामने खड़ा हो, तो दोनों को 1 रुपए के कॉइन की अलग अलग साइड दिखने वाली है। Who is wrong? Actually, no one is wrong. Problem is with perspective. आप किस पर्सपेक्टिव से, किस एंगल से चीजें देख रहे हो। आप जिस एंगल से चीजें देखोगे उसी एंगल से चीजें दिखेंगी। जो आपकी सोच है चीजें वैसी होती जाएंगी। और आई डोंट वांट दैट आपकी सोच आपके रिसर्च वर्क को इन्फ्लुएंस करे। आप बायस नहीं होने चाहिए कि मैं यही प्रूव करने, इसीलिए मैं कह रहा था हाइपोथेसिस गलत हो सकता है। आप ये ठान के मत बैठ जाओ कि यही करना है, यही होना चाहिए। दैट इज अ प्रॉब्लम। पर्सपेक्टिव is important. Method, as I told you, we are going to learn perspective, method and tool in the next slides in detail with the examples. Please change the slide. So what is research perspective? Okay, there could be many number of different perspective, but the 4 major main central perspective to research can be positivist perspective, that is study reality through objective measurement, fact and quantitative data. Simple है,
जो रिसर्च क्वांटिटेटिव डेटा, फैक्ट्स और जो दिखने में आ रहा है, जो आप ऑब्जेक्टिवली देख पा रहे हो, उसके उसके बेस पे आप जब कोई रिसर्च कर रहे हो, उसको हम कह रहे हैं पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव. Factual thing in commerce most of the time, or even science, say for instance, most of the research is based on fact, based on data, based on the things available. Yes or no? So though I have given you the example, I have taken a simple example of a customer survey. Okay, customers, actually the topic I have taken to make you understand customers satisfaction for online shopping. This is the idea I have taken to make you understand this. So when suppose you are working on this customers satisfaction on online shopping, then when you are doing the work on positive perspective, it means customer satisfaction using survey, rating and statistic analysis. बहुत ही सिंपल है कि आप देखते हो कितने लोग ये परचेस करते हैं, रेटिंग कितनी मिली है प्रोडक्ट को. सो दैट इज अ फैक्चुअल थिंग यू हैव अवेलेबल ऑन दैट डेटा यू वर्क. देन interpretive perspective. Now what is this interpretive perspective? Now it becomes a subjective meanings and human experiences. It is based on subjective. When we are saying subjective means it is based on the personal experience. When I am saying personal experience means आप जो काम कर रहे हो वो किसी एक एरिया में डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड दोज पीपल्स एक्सपीरियंस इज ट्रू. इट माइट बी रीजन चेंज and experience change, result change. Yes or no? So from where you are looking, as we have written, customers' personal experiences and feeling about online shopping through interviews. Now problem है, अब customers experience and feelings about online shopping, it could be different with different people. Why it could be different with different people? Depending upon that, are you surveying the people living in city? Are you surveying the people living in village? Are you surveying the people who are rich and very much comfortable, they are earning more money? Or are you surveying the people who are middle class? Are you surveying the people who are who belong to the poor class? So it depends. Now this becomes, your survey becomes very personal because it changes with the perspective, with the approach you take. Third, critical perspective. It examines social inequality, power relationship, injustice to bring change. That is to say that when you see things critically, you are actually trying to understand the basics of that. As we have written that if you are studying this customer satisfaction, you are trying to understand that if they are not satisfied, then what is the problem? What could be the general problem? Critical. Pricing policy, data privacy issues, corporate practices affected customers' trust and satisfaction. Means लोगों ने परचेज किया और वो उनको प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिली, डैमेज मिली, डुप्लीकेट मिली, हाँ, उनके कारण का चेंज. सो इट डिपेंड्स अपॉन अ क्रिटिकल. नाउ दिस क्रिटिकल वन इज एक्चुअली अ जनरल वन. You are trying to look from very general perspective, trying to dig deep into the real possible problems, looking to the critical perspective. And the last one is pragmatic. What do you mean by pragmatic? Pragmatic में मतलब है practical solution by using methods. Now what is the last thing? आप सोचोगे कि what is pragmatic? Pragmatic मतलब जिससे हमें क्विक रिजल्ट मिल पाए, आउटकम बेस्ड अप्रोच हो. फॉर एग्जाम्पल सिंपल चीज क्या है, आपको ये देखना है तो आप कस्टमर्स का फीडबैक लो.
On the basis of the feedback, you make a questionnaire, give it to the people, get it collected, analyze, huh? And then go ahead. So this is the way differently you can have a research perspective and research approach. Please change. Then research methods and research tools. Now, once again, as science, commerce, arts, different fields are there, different streams are there. There would be different methods and different tools and techniques. But मैं जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो जनरल है, और मैंने ट्राई भी की है कि जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं कहीं ना कहीं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों को अप्लाई हो और आप समझ पाए. सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल मेथड. नाउ दिस अप्लाइज बेसिकली टू साइंस. एक्सपेरिमेंट, that it is very simple, that you do experiment in a lab, you do experiment in a farm, you do experiment in a on animals. Now you will say that how it in social science, you do experiment with the people, with certain things, with certain issues. How in commerce, you do experiment on customers, doing certain things, trying to think that how will it affect to the things, experiment. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं रिलेटिंग टू कॉमर्स. एक कंपनी है जिसने फास्ट फूड की कंपनी थी, जिसने 50 प्रोडक्ट्स अपनी कंपनी में लगाए रखे थे और वो फूड डिलीवरी भी करती थी. वो 50 प्रोडक्ट्स बेचती थी. तब उनको ऐसे लगा कि यार हमें 50 प्रोडक्ट बेच रहे हैं बट हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, हमें इतने कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं. रीजन था कि जितनी ज्यादा प्रोडक्ट थी उनका कॉन्सेंट्रेशन उतनी प्रोडक्ट्स पे कम था, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट कम कॉन्सेंट्रेशन. उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया, दैट इज एक्सपेरिमेंट दे हैव डन. 50 प्रोडक्ट में से 40 प्रोडक्ट बनाना बंद किया, सिर्फ 10 प्रोडक्ट रखे जो उनकी बेस्ट प्रोडक्ट्स थे. बिगिनिंग में उनको लगा कि कस्टमर्स कम हो जाएंगे और कम हुए भी सही, बट धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़े. क्योंकि प्रोडक्ट कम हुई तो जो 10 प्रोडक्ट थी वो बेहतरीन से बेहतरीन बने. डिलीवरी टाइम कम हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा, और यू वॉन्ट बिलीव कि कंपनी का सेल, ज्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि 40 प्रोडक्ट घटाने के बाद कम हो जाना चाहिए, वो बढ़ गया. एक्सपेरिमेंट. सी, this is the real experiment they are doing. As a researcher, we must understand that how can we use this experimental method. Then survey. I don't think I should be explaining much on survey method. You do know what do we mean by survey, You do survey in a different way. So that is collecting data and analyzing and all such things. Then observation method. Observation method, that is to say direct observation, note taking, recording, that आप चीजें देखते हो. Observation method that you see in a science, one practical is being done time and again. You keep noting, you keep recording the thing, and ultimately you come to particular conclusion. Your experiment, actually experimental and observation is connected. If you think in a science, that you observe and you go ahead. In commerce also you observe, you analyze. In literature you read, you try to critically understand the things. You read closely, that is observing. Then case study. Now this is also a very simple aspect. I think all of us, case study can be done through interview, textual study can be done, document analysis can be done. So you can take any simple case, any simple particular medical case, and you go with. Okay,
It is means you have to take an particular model, particular species, and you work upon. Then content and document analysis. Generally it goes with literature. जो कुछ है उसको पढ़ो, जैसे साइंस में रिसर्च पेपर आर्टिकल उसको एनालिसिस करो, कॉमर्स में मार्केट ट्रेंड्स को एनालिसिस करो, उसको पढ़ो, आर्ट्स में जैसे मैंने बताया रीड द बुक्स, critical books, and all such things, and that. And the last is analytical and statistical method. Okay, so once again you analyze data. In commerce you collect data and analyze, and also so these are the basic methods with which you do your research. Okay, please change the slide. Let's come to the most important is the research ethics. आपको बताओ, मेरे गाइड, मैंने जब पीएचडी किया, मेरे गाइड में जब भी मिलने जाता था एक सेंटेंस बार बार कहते थे लेट मी स्पीक इन गुजराती. ही यूज्ड टू से कि जोजे भाई प्लेजियरिज्म ना आवे. साहब इतना सिंपल स्टेटमेंट कि देखना कि जब आप रिसर्च थीसिस कंप्लीट हो जाए उसमें प्लेजियरिज्म ना आ जाए. ये एक स्टेटमेंट मुझे जब सब मेरे गाइड ने सुनाया तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ऑनेस्टली काम करना है. See, it's very important. We are, I'm repeating the word. हम PhD scholars हैं. हमारे लिए वर्ड यूज हो रहा है scholars. We are not students anymore. We are scholars, and scholars don't cheat. So what is the first ethic? It is honesty. Honesty should be there. If there is no honesty, there should be a problem. Your research work is not a true research work. Then the second important thing is objectivity. Now it is also a part of research. Your personal prejudice, आपकी सोच क्या है, आप किस मेंटालिटी से चीजों को देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है. आपको सभी चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखना है. पर्सनली यू आर नॉट ट्राइंग टू लुक दोज थिंग्स, यू आर लुकिंग दोज थिंग्स ऑब्जेक्टिवली. थर्ड रिसर्च एथिक इज एफिशिएंसी. यू मस्ट वर्क विथ प्रॉपर एफिशिएंसी. मुझे ये कहना चाहिए या नहीं मुझे पता नहीं है, बट कोई बात नहीं, कह देते हैं. रिसर्च में और जब आप पीएचडी थीसिस करते हो, आप रेगुलरली काम करो, कभी भी बहाने मत बनाओ. दिस इज नॉट गुड. मैं जो कह रहा हूं वो आपको तब रियलाइज होगा जब आपको चैप्टर कंप्लीट करना है, आपने काम नहीं किया है, सेमेस्टर खत्म हुआ है, आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, वहां पे डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी को आपको बुलाने वाले हैं, यू आर इन अ ट्रबल. एक्चुअली आपने एफिशिएंटली काम नहीं किया है. बी ऑनेस्ट, डू वर्क एंड वर्क एक्यूरेटली. वर्क विथ एक्यूरेट थिंग. बी वेरी प्रिसाइज, वेरी श्योर वट एवर यू आर डूइंग. So it is very clear, no plagiarism. Second, no shortcuts. सिंपल सी चीज है, हम जिस रास्ते पे निकले हैं वहां पे शॉर्टकट नहीं है. मैं आपको बता दूं, जब आपने पीएचडी शुरू किया तभी आपको किसी ने नहीं कहा है कि आपके रास्ते पे फूल लगाए हुए हैं. आपको पता है कांटे ही हैं, फिर शॉर्टकट क्यों लेना, क्यों रास्ता चेंज करना. आपको पहले से ही पता था. आपको ऐसा लग रहा है कि हमने पीएचडी लिया, बाद में पता चला पीएचडी तो बहुत डिफिकल्ट है. नहीं, नो वन हैज प्रॉमिस्ड यू अ रोजी पाथ. इट वाज वेरी क्लियर दैट इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. Good research. What is, when we say good research, this term, this word good is very important.
आप देखना, हम अपनी रियल लाइफ में भी यही करते हैं। आपके घर, आपकी पानी की पाइपलाइन टूट गई होगी, आपके घर आपकी मम्मी कहेगी कि अच्छे वाले गुड प्लम्बर को बुलाओ। सर, प्लम्बर तो बहुत मिलते हैं, गुड प्लम्बर चाहिए। हाँ? इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो, घर से कोई कहेगा कि गुड इलेक्ट्रिशियन को लेके आना। नाउ व्हाट इज गुड? नो, दिस गुड सीम्स टू बी वेरी सिंपल टर्म। हु इज गुड इलेक्ट्रिशियन? Good electrician is one who is honest, who is efficient, who is dedicated, huh? Who is not cheating. We are good researchers. We should be proudly able to say that I am a researcher. And ये आप तब कह सकते हो जब ये good word you keep in mind ना, in your life it will help you a lot, कि गुड के लिए तो पूरी दुनिया पीछे पड़ी, ये गुड ढूंढ रहे हैं। अरे किसी होटल में खाना खाना, तब भी ऐसे पूछते कहीं अच्छा खाना वहां पे लेके जाना है। खाना तो हर जगह मिलता है, अच्छा खाना चाहिए। am I true? And never think of quick goal. Don't think of winding up your research work. No need. जल्दी जल्दी खत्म करना है, पहले समय नहीं काम करना है, क्विक वर्क। पूरे 4-5 महीने काम नहीं हुआ, लास्ट मंथ में काम करना शुरू कर रहे हो, जल्दी जल्दी भाग रहे हो। नो, इट इज नॉट योर ऑनेस्ट वर्क। सो प्लीज फॉलो द रिसर्च एथिक्स। प्लीज चेंज द स्लाइड। अब जब हमने इतना सारा कर लिया है, स्कोप ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस, सर्वे ऑफ लिटरेचर, मेथड्स, टूल्स, क्या करो? अब सब इकट्ठा करो। गेदर योर गुड्स। जितना भी सामान, अब तक जितनी बातें की, उसकी गठरी बांधो और काम करो शुरू। क्या काम करो शुरू? लिखना शुरू करो। Start your work. Start writing. Pilot your instrument. Begin your work now. Execute data collection. So if you are to collect data, start collecting data. If you are to read, because now you know how to read. You know what is the method. You know what is the tool to be used. You know कैसे करना है, सब कुछ पता है। अब शुरू करो। Uphold ethical standards. Simple. That now when you have everything with you, you start working. And when you start working, let me tell you that ऐसा माना जाता है कि आप शुरू करोगे तो होगा। सिंपल सी चीज है। हमें गिरनार, हम ये BKNMU यूनिवर्सिटी है वो जूनागढ़ में, और वहां पे गिरनार माउंटेन है। सिंपल सी चीज है, आपको माउंटेन चढ़ना है, नीचे देख के घूर घूर के देखोगे तो नहीं पहुंचोगे। देखने से और सोचने से कि कब होगा, कैसे चढ़ेंगे, बट चढ़ना शुरू करोगे तो सुबह शुरू करोगे तो दोपहर को, ज्यादा धीरे चले तो शाम को, रात को पहुंच जाओगे। एवरी जर्नी बिगिंस विथ अ फर्स्ट स्टेप। स्टार्ट राइटिंग। मैं तो ये कहूंगा, आपको पता नहीं है क्या लिखना, जो लिखना है स्टार्ट राइटिंग अ रफ ड्राफ्ट। स्टार्ट वंस, एक बार शुरू कर दो। 10, 12, 15, 20, 25 पेज लिख डालो। फिर इफ यू फील डाउटफुल, गो टू योर गाइड, बिकॉज गाइड विल हेल्प यू टू सिस्टमाइज योर नॉलेज। आपने नॉलेज को तो लिख लिया, रफ ड्राफ्ट इज रेडी। योर गाइड विल हेल्प यू to systemize it, how to arrange it. Yes. So gather your work and start. Please change the slide. Then
आपने पहला चैप्टर लिखा, इंट्रोडक्शन, रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, दिखाया, देन व्हाट इज टू बी डन? स्टार्ट राइटिंग चैप्टर्स, स्ट्रक्चर योर नैरेटिव। मतलब आपको कौन से चैप्टर, सभी चैप्टर के टाइटल्स डिसाइडेड है, किस चैप्टर में क्या करना है, इट इज क्लियर। स्टार्ट राइटिंग चैप्टर्स। वंस अगेन आई एम सेइंग स्ट्रक्चर योर नैरेटिव, मतलब आपको पता है कौन से एंगल से लिखने हैं, कौन सी मेथड यूज करनी है, कौन सा टूल यूज करना है, व्हाट इज माय रिसर्च क्वेश्चन, व्हाट इज माय हाइपोथेसिस। कीप एवरीथिंग इन माइंड व्हेन यू आर डूइंग। इसलिए मैंने सब पहले कहा कि गठरी है, जिस जिस चीजों की हम बात कर रहे हैं उसको साथ में लेके चलो। ओके, राइट एंड रिवाइज write and revise intervally। लिखो और रिवाइज करो। सिंपल। व्हेन आई से राइट एंड रिवाइज का मतलब है कि एक बार लिख लिया, मतलब छोड़ मत दो उस चैप्टर को, वापस 2 दिन 5 दिन 8 दिन के बाद पढ़ो। आई एम डैम श्योर आप खुद ही उसमें कुछ चेंज करोगे, क्योंकि आपका लिखा ही आपको लगेगा यहां पे और कुछ ऐड हो सकता है, यहां पे कुछ रिमूव हो सकता है, यहां पे ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। सो इंप्रूवमेंट हैपेंस व्हेन यू रीड एंड रिवाइज, एंड इन दिस वे view the golden way, that is to say that keep doing the chapter after chapter after chapter and complete your work. Please change the slide. If you do this way, then you will ultimately reach to the destination. Now, what is the destination? It is a powerful conclusion. Now, let me tell you, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी जो है वो आपका आउटकम है, आपका डेस्टिनेशन है, आपका कंक्लूजन है, आपका रिजल्ट है। क्योंकि आपके पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है, ओके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, वॉट एवर नंबर ऑफ चैप्टर आर देयर इन बिटवीन, 3 या 4 जो भी आपने रखे हैं, तो सभी चैप्टर के बेस पे कंक्लूजन है। मैंने कई बार देखा है लोग कंक्लूजन लिखते हैं जिनका आगे के चैप्टर से कनेक्शन ही नहीं मिलता। आपको लगता है यार आगे कुछ लिखा है, बंदा पीछे कुछ लिख रहा है। नो, योर कंक्लूजन शुड बी written on the basis of the earlier chapter. Okay, articulate your contribution, state your contribution, that whatever that is research gave we had earlier, you just tell this is something which was not done earlier, I have done it, prove it. And the last, prepare for the defense, that is prepare for the viva. So this is the way you must reach to your destination. Please change the slide. Please change the slide. Okay, so this is the way you reach to the destination. You haven't just completed a journey, you expanded the map. Actually हम कह रहे हैं कि आपने सिर्फ जर्नी खत्म नहीं की। बहुत सिंपल तरीके से समझने चाहो तो आप जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हो उस टॉपिक में आपने जो कुछ लिखा है वो आपका कंट्रीब्यूशन है। व्हाई इट इज योर कंट्रीब्यूशन? बिकॉज इट इज यू हैव रिसर्च्ड, you have analyzed, you had collected the data, you understood and you have stated. These 3 lines are most important. A doctorate is more than a degree. See, keep in mind, हम डिग्री के लिए सिर्फ नहीं काम कर रहे हैं. It's a more than a degree. It's a very pious work. आप एक उम्दा काम में जुड़े हो. PhD thesis डिग्री के लिए नहीं है. It is a doctoral work is not a degree. It's a transformation from a consumer of knowledge to a producer of it. हम कह रहे हैं कि अब तक आप क्या कर रहे थे?
नॉलेज को कंज्यूम कर रहे थे, नॉलेज का यूज कर रहे थे। पहली बार जब आप पीएचडी का थीसिस लिख रहे हो, आप नॉलेज के कंज्यूमर नहीं हो, सिर्फ आप नॉलेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, आप नॉलेज को स्प्रेड भी कर रहे हो, आप नॉलेज दे भी रहे हो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Your dissertation is not an end point, it is a first landmark. You have contributed to a scholarly world, a new charted territory for others to build upon. Welcome to the expedition. That is to say that your research work is not the end. क्योंकि आप जब खत्म करोगे तब आपके बाद जो शुरू करेगा वो वापस रिसर्च प्रॉब्लम लेके आएगा, वो वापस रिसर्च गैप ढूंढेगा। तब आपके फील्ड में जिसको काम करना है उसको लिखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मेरे पहले बंदे ने जो लिखा है उसमें इतना इतना रह गया। और आपको पता होगा जब आप भी अपना प्रपोजल लिख रहे हो, आप लास्ट में और इवन आपके पीएचडी थीसिस के एंड में लिख रहे हो व्हाट आर द फर्दर स्कोप ऑफ रिसर्च, आपके ही टॉपिक में और कौन कौन से स्कोप है और कहां कहां काम हो सकता है। सो योर रिसर्च वर्क इज अ माइलस्टोन। When you are completing it, you are putting it in a public, and your research work is going to be used by someone. That it is like an discovery. बहुत सिंपल तरीके से सोचो तो पहला बंदा जिसने टेलीफोन बनाया, उसके बाद दूसरे बंदे ने टेलीफोन में से मोबाइल बनाया, वो कीपैड वाला था। उसके बाद उसमें रिसर्च होके हमारे पास मोबाइल टच पैड वाला आया, उससे छोटा आया, अपडेट होता रहा। सी दिस इज व्हाट इज द वर्क ऑफ रिसर्च। एक ने किया, दूसरे ने उसमें अपडेट किया और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई। और आज भी हम ये नहीं कह सकते कि रिसर्च इज ओवर। यू कैन नॉट से दिस इज द लेटेस्ट मोबाइल, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, इट इज ओवर। आप कभी नहीं कह सकते कि अब कालिदास के ऊपर बहुत काम हो चुका, अब नहीं होगा, नहीं कह सकते। प्रेमचंद, आपको लगता है बहुत काम हो चुका, नहीं कह सकते। प्रेमचंद के ऊपर अभी भी काम हो रहा है, हो सकता है। नहीं कह सकते शेक्सपियर के ऊपर काम हो चुका, नहीं कह सकते कि कॉटन इंडस्ट्री पे काम हो चुका, बहुत हो चुका, नहीं करना है। नहीं कह सकते कि सोशल इश्यू के दिस कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी इनके ऊपर बहुत काम हो चुका, नहीं करना। नहीं कह सकते कि विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम हो चुका, नहीं करना। नहीं, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जिस पे बहुत काम हो चुका। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि गैप कहां पे है। इफ यू फाइंड आउट द गैप, then your research is always fruitful. Only problem is you should be able to find that where is a gap. If you don't find a gap, then it's end of the research. But I told you, research has a beginning, it does not have an end. Research never ends. So with this, I thank you all and wish you all the best for your journey. And do honest work dedicatedly, and please take help of your guide, of your fellow friends, and enjoy your PhD work. Don't feel it a burdensome thing, make it a celebration. Thank you all. Thank you, Gurnani sir. Thanks a lot. Thank you.